So first topic of general knowledge. UNO. UNO stands for United Nations Organization. UNO or United Nations was founded in 1945 at the end of Second World War. At the end of First World War, League of Nations was established. At the end of Second World War, UNO was founded, and its present members are 193. That was quite fewer when it was established in 1945. Pakistan became member of UNO after independence. Mission and work of United Nations are guided by the purpose and principles contained in its founding charter. Main organs of the United Nations are General Assembly, Security Council, the Economic and Social Council, the Trusteeship Council, International Court of Justice, ICJ, and the UN Secretariat. Most important organ of United Nations is the Security Council. And there are 5 permanent members of Security Council which have major role. All the members of United Nations are, in United Nations, the highest post is Secretary General of United Nations Organization. Antonio Guterres is present Secretary General of United Nations Organization. ये significant point है. इस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनका नाम एंटोनियो गुतेरेस. Institutions, organs of United Nations की बात करें, first one is the General Assembly. All members of United Nations are also member of General Assembly. जो हम कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक हैं, तो वो रुकन ममालिक असल में जनरल असम्बली के मेंबर होते हैं, और जनरल असम्बली का हर साल एक इजलास होता है. लास्ट सेशन दैट वाज द 76वां इजलास था, दैट वाज हेल्ड between 20 to 26 September 2021. Every September, member states meet in General Assembly Hall, and General Assembly Hall is located at headquarters in New York. Mean UN headquarters in New York. तो अक़वाम मुत्तहिदा का मरकज़ भी न्यूयॉर्क है, जनरल असेंबली का भी वही है. And the representative of the states, mostly heads of state, mean Prime Minister, kings, presidents, they address the General Assembly. Sometime on their behalf, foreign minister address the assembly. In last session, Pakistani Prime Minister Imran Khan addressed General Assembly. In 2020, there was, you can say, year of COVID-19 and pandemic. 75th session differed because it was online session of General Assembly. यानी 2020 में जो इजलास हुआ वो ऑनलाइन कराया गया, और 2021 में दोनों ऑप्शंस थे, either country can participate online or they can visit US. At present, Abdullah Shahid is president of General Assembly. He belongs to Maldives. He is Maldivian former foreign minister, and he swore as president in 66th session of General Assembly. As I have just said,
most important, most significant institution is Security Council. Security Council has primary responsibility for the maintenance of international peace and security. We can say that was the basic mission of United Nations, to stop war, to promote peace. And for the sake of global security, global peace, they established Security Council. It has 15 members and each member has one vote. 5 permanent members have veto power, and if any member of 5 permanent member makes veto, Security Council cannot take decision. USA, UK, Russia, France, and China, these are 5 permanent members of Security Council. हम कहते हैं कश्मीर का मसला सिक्योरिटी काउंसिल में कि रेजोल्यूशन के मुताबिक हल किया जाना चाहिए, और हम कई दफा ये बात सुनते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल इन रेजोल्यूशन पर अमल क्यों नहीं करती। तो क्यों नहीं करती? इसलिए कि रशिया जो है, जब तक कोल्ड वॉर का जमाना था, तो चूंकि पाकिस्तान अमेरिका का सपोर्टर था और रशिया और अमेरिका की कोल्ड वॉर थी, तो रशिया जो है उस कश्मीर की जो रेजोल्यूशंस होती थी उनको वीटो कर देता था। इस वजह से उस तरफ कोई कदम आगे नहीं बढ़ा। अब कोल्ड वॉर नहीं है, लेकिन अब खुद यूएसए जो है वो पाकिस्तान का वैसा सपोर्टर नहीं है जैसा कोल्ड वॉर के जमाने में था। Probably only one support for Pakistan in Security Council is China. Under the Charter of United Nations, all member states are obliged to comply with council decisions. यानी जो जनरल असेंबली के मेंबर हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर हैं, उन पर फर्ज हो जाता है कि वो इस सिक्योरिटी काउंसिल के डिसीजन को माने। जैसे 9/11 के बाद ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने डिसाइड कर दिया था कि लाजमी जो है वो अमेरिका को ये राइट पहुंचता है रिटेलिएशन का अपने मुखालफों के खिलाफ। तो 9/11 के बाद सारे कंट्रीज पे ये मेंबर कंट्रीज पे ये बाइंडिंग थी, दे वर सपोज्ड टू सपोर्ट अमेरिका। ICJ, the International Court of Justice, is very important organ. It decides international disputes. पाकिस्तान का एक फेमस जो डिस्प्यूट है ICJ में, आपको पता है वो काफी अरसे से है। वो very famous Indian spy that's in Pakistan. Kulbhushan Yadav, sir. Kulbhushan Yadav, yes, Kulbhushan Yadav case that is in ICJ. ICJ, its center is The Hague. आमतौर पर जो वार के केसेस हैं, वार क्राइम्स के जो केस होते हैं, वो भी ICJ में उनका ट्रायल किया जाता है। प्रोबेबली जो आखिरी बड़ी सजा मिली थी ICJ से, वो यूगोस्लाविया के साबिक सदर मिलोसेविच को आखिरी बड़ी सजा जो है वो ICJ से मिली। UN Economic and Social Council, abbreviated as ECO, SOC, brings people and issues together to promote collective action for a sustainable world. Recently, we can say in 21st century, United Nations has set an agenda that is called 2030 Agenda. 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable development means economic progress, but not at the cost of environment. And for that purpose, there is HLPF, High Level Political Forum, and High Level Political Forum is a central forum for follow-up and review of 2030 Agenda for Sustainable Development and Sustainable Development Goals. And that is the basic job of Economic and Social Council of United Nations. World Economic Forum
based in Cologne, Geneva, Switzerland, that was founded in 1971, is to improving the state of the world. We can say that's an independent body, but it keeps in view the UN Economic and Social Council's agenda. Two other organs are UNESCO and UNICEF. स्कूल के जमाने से आप इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं. UNESCO stands for United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. That was founded in the same year, 1945. Its headquarters is in Paris, France. And that's an agency aimed at promoting world peace and security through international cooperation in education, science and culture. Education, science और culture में global cooperation का ये इदारा है, इसको बहुत वैल्यू है. यूनेस्को बच्चों के लिए जो इदारा है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, that is called UNICEF, that was founded in 1946. Its headquarters is New York, and UNICEF is responsible for providing humanitarian and developmental aid to children across the world. Another organization that is called World Health Organization, WTO, that's very much in air during pandemic of COVID-19. हर कोई जानता है कि जी WHO ने ये कह दिया, WHO ने ये कर दिया. आपको पता है इंटरनेट पर WHO का कोविड के हवाले से स्पेशल वेबसाइट मौजूद है जो एवरी सेकंड जो है वो जैसे एक ऑटो कैलकुलेटर होता है उससे अपडेट होता रहता है, जो हमें बताता है कि कोविड के जो है वो टोटल केसेस कितने हैं और एक्टिव केसेस कितने हैं, रिकवर्ड कितने हैं, डेथ्स कितने. WHO directs and coordinates international health within the United Nations system. World Health Assembly is the decision making body. जिस तरह जनरल असेंबली है यूएनओ की, तो WHO की वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है. That is the decision making body of WHO. It is led by DG, Director General, and present DG Director General is Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. World Trade Organization, WTO, it is thought very important institution of what we say free economy, capitalist economy, an intergovernmental organization that is concerned with regulation of international trade between nations. तो WTO stand for World Trade Organization और इसका जो काम है वो रेगुलेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, उसको ये रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है. तो पहले तो ये आज मैंने आपसे ये शेयर की हैं कुछ यूनाइटेड नेशंस के हवाले से. तो अगर इसके हवाले से अभी कोई क्वेश्चन है तो क्विकली पूछ सकते हैं, फिर मैं थोड़ा आगे जो है वो मजीद बात करना चाहता हूँ. यूएनओ के चार्टर के आर्टिकल्स काइंडली कंफर्म कर दें कितने. मुझे एक मिनट मैं चेक करके बताता हूँ कि उसकी कितनी है. मेरे ज़हन में वैसे 11 है. मैं अभी उसको चेक करके आपको जो है इसका जवाब देता हूँ. राइट सर, राइट. आर्टिकल, नंबर ऑफ आर्टिकल्स ऑफ चार्टर फॉर ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट चार्टर है ह्यूमन राइट्स का, उसके नंबर ऑफ आर्टिकल जो है वो देख लेते हैं कितने. जी नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज.
सर ये यूएन की जो यूएनओ की जो लैंग्वेजेस हैं वो कितनी है मतलब, और कौन कौन सी हैं? एक तो ये कि जनरल असेंबली में जो मेंबर कंट्रीज हैं उनको अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करने का हक हासिल है। ठीक है। तो यानी कि जिन कंट्रीज को यूएनओ ने रिकग्नाइज किया हुआ है उनकी जो भी स्टेट लैंग्वेजेस हैं वो उसमें आती हैं। लेकिन हम जानते हैं कि एक ही लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट कंट्रीज को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, ये सब जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ आते हैं। तो एग्जैक्ट नंबर जो है वो देखना पड़ेगा कि मेरे ख्याल में तो शायद इस तरह से यूएनओ की कोई लैंग्वेजेस की तादाद नहीं है स्पेसिफिक, क्योंकि यूएन का जो आगे ये जो यूनेस्को है वो एडवोकेसी करता है प्रेजर्वेशन ऑफ ऑल लैंग्वेजेस एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड। तो अगर वो उसमें पिक एंड चूज करते हैं तो शायद ये उसके साथ मैच ना करता हो, लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है कि ये कितनी लैंग्वेजेस हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं यूएन। सर मैंने 6 पढ़ा था सर, 6 अरेबिक को मतलब ऐड किया हुआ उसमें। ये अब आपने जिक्र किया तो मेरे जहन में भी ये बात आई है कि ये है, अ, लेकिन इसको कहते क्या है ये मुझे अभी देखना पड़ेगा। जी नेक्स्ट। यूएन charter that is called Universal Declaration of Human Rights. It contains 30 articles, 30 आर्टिकल्स है इसके। Next is pandemic of COVID-19. That is thought a viral disease. It's contagious in nature and it turned into epidemic, and then it even it was confirmed that all members of WHO have confirmed that they have that issue, and it was declared a pandemic. WHO issued its warning in beginning and declared COVID-19 as a pandemic. In though initially it was Wuhan, where it was Wuhan in China that was identified.
Afterwards, it paralyzed life across the globe, and concern was that that's contagious disease and that's infectious. Its scale is too high, and its vaccine has not yet been discovered. That was the situation in 2020. And then we saw, you can say, a global focus on that disease as well as its death toll. Not only the people who lost their lives, they were the victims, rather a fear and panic that also got attention. Initially, there were precautionary measures that was suggested to control that disease. Afterwards, we see state level measures like complete or partial lockdown. Hard strategy of UK was suggested, and then it failed. Ban on gatherings, including all types of gathering like religious gathering, Hajj Umrah, and adjournment of Tokyo Olympics that couldn't be held in 2020 and actually held in 2021. It changed, you can say, economy and accelerated a shift from commerce to e-commerce, manual transaction to online shopping, outsourcing, online jobs, and even banking sector has seen tremendous changes. In educational sector, online education, that was an idea, but it became an overwhelming practice through the universities like edX, online programs of Yale University, Harvard University, Stanford University, Cambridge University, and there is a mad race for educational databases and apps which are being developed. Variant is a result of mutation of virus, and virus during the process of mutation, they take different shapes. Thousands of variants are expected or possible of COVID. We have seen its alpha, beta, gamma, delta variants, and recently Omicron. Omicron is linked with South Africa. Delta, that caused a huge, you can say, loss in India. Gamma in Brazil. Certain vaccination has been tried, and even some nations, they claim they have ensured 100% vaccination. Others, they are taking initiatives for this.